Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher Amjad Shahzad. I hope you all are doing well at your homes. Looking forward to make your colleges again. In the meanwhile, keep keep watching at these lectures so that you can gain something. In today's lecture, before starting the book, I'll start grammatical portion of your syllabus. So to start with grammar, I'll start with some basics. What we are studying? We are studying English. We are studying English. So if I say you define English, how would you define English? What is English? It is a very simple. I'm talking of very basic things. English, it is a language. What is English? It is a language. Here, the question arises, what is a language? What is language? Language is a tool. Language is a tool for communication. Language is a tool for communication. What is communication? Communication, it is the exchange of information by using some medium. It is the exchange of information. मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वापस आता है. एक्सचेंज का वोकैबुलरी होता है. By using some medium. मीडियम बोलना भी हो सकता है, यानी जुबान से, लिख के भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, ईमेल के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी हो सकता है. These all are the ways of communication. Here we are concerned with which medium? Language. Which language? English. So how is English language formed? What is the basis of any language? But we are talking about English. What are the basic units of language? We call it alphabets. How does a language come into place? How is a language formed? Alphabets, जिसको हम लेटर्स भी कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम उनको लेटर्स भी कहते हैं. What are alphabets? How would you define alphabet? Alphabet, these are signs and symbols. These are signs and symbols. अलामतें होती हैं, निशान होते हैं. To
साउंड्स क्या करते हैं? ये अल्फाबेट्स काम क्या करते हैं? प्रोड्यूस साउंड्स। कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में? देयर आर 26 अल्फाबेट्स in English. Now these 26 alphabets are divided into two types. Vowel and consonants. Vowels कौन से हैं? A, E, I, O, U. These 5 alphabets are called vowels, while other 21 remaining 21 alphabets are called consonants. Now these 21 alphabets, consonants, and these 5 vowels combine to make alphabets. There are some other, अब याद रखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये अल्फाबेट्स का यूज क्या है? टू क्रिएट, टू मेक, टू प्रोड्यूस साउंड्स. There are some sounds that are not produced from these 26 alphabets. So what do we do? क्या करते हैं हम? There are some other alphabets that are made from these 26 alphabets to make other sounds, to pronounce some specific sounds. For example, CH combine to create a specific sound. SH is combined to make some specific sound. ZH is made to create some specific sound. ION that makes another sound. TIO that makes another sound. So these alphabets, which are the combination of these basic alphabets, these are called digraphs. So what are digraphs? Digraphs are the alphabets made from a combination of 2 or more basic alphabets. So alphabets are the basic units of a language, of English language. Here we are talking about English. Alphabets are the basic units of English language. So when we have understood what are alphabets, alphabets combine to make words. Alphabets combine to make words. Alphabets combine to make words. What are words? Words are the combination of alphabets. Alphabets combine करते हैं तो word बन जाता है. क्या सिर्फ combine करने से word बन जाएगा? For example, A, B, C combine कर दिया मैंने तीनों, word बन गया? No. P, T, O, U word बन गया? No. तो क्या करेंगे? सिर्फ combination of alphabets काफी नहीं है. अरेंज
अरेंज्ड, इनकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए टू गिव सम मीनिंग्स। अब ये पी टी यू को मैं अरेंज कर देता हूं पी यू टी। नाउ इट मेक्स अ वर्ड। ए बी सी को मैं कंबाइन कर देता हूं सी ए बी। नाउ इट हैज बिकम अ वर्ड। देयर आर so many words, so many words. How many alphabets are required to make a word? Simple answer is 2. T O 2. A S S. I N in. O F off. These are words that have some specific meanings. There are two alphabets, A and I. That these two alphabets at the same time work as alphabets as well as words, because this A means one, this I means man. तो ये दो अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम यहां पर ए की बात करें तो बी ए टी बैट, यहां ए एस अल्फाबेट यूज होगा टू क्रिएट अ साउंड। और I am a teacher, यहां ये A as word यूज हो रहा है। T I P tip, यहां ये I as alphabet यूज हो रहा है, जबकि यहां ये I as word यूज हो रहा है because it is giving some meanings. So हमने क्या किया? We started with the alphabet and we combined the alphabets to make a word. What is next? Next we make another combination. Next we make another combination. We combine words. We combine words to make a clause. Sorry. We combine words to make a phrase. That is the next step. We combine words to make a phrase. Combination of words arranged, combination of words arranged to give some concept but not the complete meanings. What is phrase? Phrase is a combination of words arranged to give some concept but not the complete meanings. दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो इस तरह अरेंज किया जाए कि कुछ ना कुछ मीनिंग्स दे रहा हो बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग्स. फॉर एग्जांपल, give up, under the table, in the class, out of the room. दो लफ्ज हैं मिलकर
in the class? Who is in the class? Anybody is coming in the class or somebody is leaving from the class? Out of the room. Who is out of the room? Somebody is going out of the room. Confirm नहीं है. So these are called phrases. These are called phrases that give you some meanings but not the complete sense. Next, from phrases we made clause. What is a clause? Keep in mind, I am just giving you the basics, not in detail. In detail we will study later on. हम phrases को, clauses को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. Clause. Clause is the combination of words and phrases arranged to give complete meanings, must contain a subject and a predicate. What is predicate? Predicate is a part of sentence that contains a verb. So we can say must contain a subject and a verb. Clause क्या होगी? Combination of words and phrases जो पहले बना चुके हैं, arrange करते हैं जहां complete sense नहीं थी, जहां complete meanings आ गए, और इसकी शर्त यह है कि इसमें एक subject और एक verb यानी predicate लाजमी होना चाहिए. अब देखिए यहां हमने दो लफ्जों की एक एग्जांपल दी थी. यहां हम एक और एग्जांपल लेते हैं. He goes. यहां भी दो लफ्ज हैं, लेकिन ये क्लॉज बन गई है. He is a subject, goes is a verb, and it is giving you the complete meanings. He goes is a complete clause. एक और इंपॉर्टेंट बात, it is a part of a sentence. How? अब यहां से हम क्लॉज से जाएंगे सेंटेंस की तरफ. क्लॉज से हम जाएंगे सेंटेंस की तरफ. What is sentence? सेंटेंस और क्लॉज में एक ही मेन फर्क है. सो क्लॉज से हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ. What is sentence? Sentence is very much similar to clause. Clause और sentence में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. इसको थोड़ा बेसिक्स थोड़ा सा समझने के बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Look at this sentence. He was sleeping when I called him. अब इस सेंटेंस में देखें, he was sleeping. It is a clause. I called him या when I called him, ये भी एक clause है. क्यों? इसमें ये एक subject है, एक verb है यानी predicate है. इसमें भी एक subject है, एक verb है यानी predicate है. तो ये दो clauses बन गई. तो sentence को हम क्या कहेंगे? Sentence is the combination of phrases and clauses arranged to give a complete meanings, arranged to give complete sense, or that sentence
may consist of one or more clauses. अब इस सेंटेंस, इस क्लॉज को मैं उठा के यहां ले आ रहा हूं, he was sleeping, तो क्या हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया which consists of only one clause. So यहां से हमें क्या बात समझ में आई, every clause can be a sentence. Every clause can be a sentence, but every sentence can't be a clause. हर clause तो sentence होती है, लेकिन हर sentence clause नहीं होता. इसलिए कि ये एक complete sentence है, इसको हम clause नहीं कह सकते. It consists of two clauses. So this is a clause. This can be a sentence. This is a clause. This can be a sentence. So every clause can be a sentence. Every sentence cannot be a clause. तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, अल्फाबेट से. अल्फाबेट से मिला के हमने वर्ड्स बनाए, वर्ड्स को मिला के हमने फ्रेज बनाई, फ्रेज को मिला के हमने क्लॉज बनाई, क्लॉज को मिला के हमने सेंटेंस बनाए. अब सेंटेंस को मिला के क्या बनता है, खत्म करने के बाद सेंटेंस को मिलाएंगे तो बनेगा पैराग्राफ. सेंटेंसेस को मिलाएंगे, एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा. डिफरेंट पैराग्राफ्स को कंबाइन करेंगे तो एसे बन जाएगा या स्टोरी बन जाएगी. रिलेटेड पैराग्राफ्स एक ही सब्जेक्ट के कंबाइन करेंगे तो एसे या स्टोरी बन जाएगी. So these are the basics of English language. From here onwards, study of these words, phrases, clauses and sentences, that is grammar. That is grammar. So before starting grammar, we should know what is a word, what is a phrase, what is a clause, what is a sentence. So these are basics of what? English grammar. So from here onwards, we'll discuss grammar. We'll start discussing grammar.